हेलो दोस्तों, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने लाइक तो किया है और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने लेने चाहिए। तो आज स्टार्ट करें उनके हिसाब से ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट or byproducts which is one of the principle of green chemistry। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि ग्रीन केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है, उसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल एंड हाउ वी कैन इलुस्ट्रेट इट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इलुस्ट्रेट मीन्स एक्सप्लेन कैसे करेंगे वही बात। तो देखो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो कुछ चीज होने के पहले ही अगर हम कुछ प्रिकॉशन लेते तो वो बहुत ज़्यादा होता है अच्छा। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने यही दिया है कि हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट ना बने और बाय प्रोडक्ट्स भी ना मिले। तो ऐसे अगर हमारी प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, टू गिव प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट देन क्लीनिंग up and treating waste after it has been created. So if we consider this principle, if it is not possible, then what is that? See, there is a one technology should be developed, that should be zero waste technology. What is that? To develop the zero waste technology. यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ही ना हो या फिर मिनिमम अमाउंट में फॉर्म हो, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करनी चाहिए। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर वैसी टेक्नोलॉजी भी ना कर पाए तो उसमें हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए। क्या? अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसका रीयूज हमने करना चाहिए। तो वो थर्ड पॉइंट क्या है, यूज द वेस्ट प्रोडक्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर सिस्टम। नाउ सी, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर हम कंसिडर करते हैं थर्मल पावर स्टेशन, उसमें जो कुछ भी वेस्ट आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ द एश। Then we can use that ash as a raw material in the manufacturing of the bricks as well as in the manufacturing of the cement. This is the one example. Second example is that sometimes what will happen, we will clean some machineries. When we are cleaning it, we are using water, and during that cleaning that waste water is coming out, it is called as a effluent. That effluent should be used as a coolant water. Now we are going to start the second question. What is that? Say, write any 3 advantages of nanoparticles and nanotechnology. So in that we have to write only 3 advantages of the nanoparticles and the nanotechnology. So what are these 3 advantages? See, if we are using these nanoparticles, then what will happen? Here we can make the revolution in the electronics and computing. So in this way, as we know that previously there was the size of the this computer was bigger one. After revolution, after modification, we made it very smaller one. Like that here also, by using nanoparticles we can make the revolution in the electronics and computing. Second one, as we know that solar power means when we are using the solar system, it is too much costly. So no one is using as usual like our electricity, means regular electricity. So here also by using that nanoparticles and nanotechnology, we can make that solar power more economical. That is the second advantage. And third one, in the manufacturing of the smart drugs to cure the diseases faster and without side effect. That is very important, because if we are taking the medicine, there are the number of side effects are also there. So by using this technology, we can make the drugs which cures the any disease faster and without side effects. So these are the 3 advantages of this nanoparticles and nanotechnology. Next one question is, write one example of nanomaterial used in the following. So they have given 3 applications of the nanoparticles and we have to identify which nanoparticle is used for that particular application. So in that first one, water purification. In that water purification, silver nanoparticles are used. Second one, tire of car. In the tire of car, or we can say that to increase the life of tire of car, we have to use the carbon black.
नेक्स्ट वन, एंशिएंट ग्लास पेंटिंग। जैसे कि देखो, अगर आपने कभी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट किया होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से कलरिंग होती है। बिफोर सो मेनी ईयर्स दे हैव पेंटेड, बट राइट नाउ ऑल्सो वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सिल्वर or gold nanoparticles. So these are the nanoparticles we are using for these applications. Next one question, explain the role of green chemistry. तो यहाँ पे हमें रोल एक्सप्लेन करना है ग्रीन केमिस्ट्री का. So now we'll discuss the role of green chemistry. जैसे कि हमें पता है, अगर ग्रीन केमिस्ट्री है जिसका कि मेन मोटो है कि हमें ऐसे वाले टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन करना है जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट कम होगा, हैजार्डस सब्सटेंसेस कम प्रोड्यूस होंगे. मतलब इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा तो हमें ज़रूर होगा, हम पोल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए एक अपना आता है टू प्रिवेंट पोल्यूशन. ठीक है, सेकेंड वाला, अगर हम पोल्यूशन लेवल कम कर देंगे तो और एक फ़ायदा है. वो कौन सा? जैसे कि देखो, अभी तो हमें बहुत दिनों से सुनाई देता है कि ओजोन डिप्लीशन. तो वो ओजोन डिप्लीशन होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो कुछ भी हैजार्डस रेडिएशन है वो दैट विल रीच टू अस एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. So in this way, if we are applying that green chemistry, then we can protect that ozone layer also. This is the second role of that green chemistry. Third one, greenhouse effect. That is also another one problem that can be controlled by this green chemistry. Next one, अगर हम consider करते हैं कौन से भी company, industry, मतलब generally हम consider करते हैं chemical industry. If in chemical industry any reaction is going on, for that purpose, if 1000 rupees amount is required, then if we are applying the green chemistry, means we are using the biological catalyst like that, then we can reduce its cost. So that is nothing but to reduce the capital expenditure, means we can reduce that amount costing also. Next one, to promote the innovative chemical technologies to reduce or to eliminate the generation of hazardous substances. So that is the main role of the green chemistry. आपको इतने सारे points लिखने हैं for this question. And now last question, explain any three characteristic features of nanoparticles. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो उसमें फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे कलर, सेकेंड वन इज द सरफेस एरिया एंड थर्ड वन इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. तो कलर में अगर डिस्कस करते, इन दैट वी कैन से दैट कोई भी मेटल लो, उसका अगर हम एक कलर कंसिडर करते तो उसका स्पेसिफिक कलर होता है, बट व्हेन वी आर डिवाइडिंग इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स इट्स कलर बिकम्स different one. That is nothing but the one characteristic feature of the nanoparticle. See, in that first one, color is the optical property that is different at nanoscale. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है देखो मैंने, color is the optical property which is different at the nanoscale. यहाँ पे अगर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो elemental gold which is occurs in the shiny yellow color, but when we are making its 100 gold atoms, means when we are cutting into the 100 pieces, at that time it becomes more red in color. That is the first characteristic feature of this nanoparticle. Second one, in that second one, surface area. In that also, if we consider particular this any one substance, so here we will discuss about this pen. If we consider this pen, its volume and surface area, that ratio is very important. So see, high surface area to volume ratio is very important characteristic. So in that, if we consider this particular pen, its surface area will be there and it have some volume, but when we are cutting into its pieces, at that time its volume remains same, but its surface area increases for the reaction. If we consider any bulk particle and when it is divided into group of individual nanoparticles, see how you have to write. Firstly, you have to complete this statement and after that you have to write second point, that is when bulk particles are divided into group of individual nanoparticles, then volume remains same but surface area increases. तो उसमें क्या होता है, अगर
हम बल्क पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं स्मॉलर वन, तो उनका क्या हो जाता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है पर उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। विथ लार्ज सरफेस एरिया एंड सेम वॉल्यूम these smaller particles reacts faster because they provides more number of reaction sites. And last one, catalytic property or catalytic activity. In that catalytic activity we can say that these nanoparticles acts as a catalyst and they can be recycled as well as they can be separated easily. If we consider these nanoparticles are heterogeneous catalyst. What is meant by that heterogeneous catalyst? Heterogeneous catalyst means that either that starting material or we can say that catalyst, they are not present in the same phase, means both are not will be in the solid phase, both will not be in the liquid phase and both will not in the gaseous state. If one is in the solid, second will be in the liquid state, like that. That is nothing but the heterogeneous catalyst. Next one is that if we consider that nanomaterial based catalyst show increased catalytic activity, means अगर नॉर्मल वाला एक catalyst कंसिडर करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है नैनो पार्टिकल्स की। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर द गोल्ड इन बल्क फॉर्म, वो इनरिएक्टिव होता है, but if we consider the nanoparticles of the gold, they are good catalysts. Next example we can say that is the titanium dioxide, TiO2, as well as zinc oxide, which are used in the photocatalysis. And another one we can say that platinum and palladium is used in the hydrogenation as an catalyst. तो ऐसे करके हमने ये वाला तो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अभी बच गया लास्ट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज दैट लास्ट क्वेश्चन? एज वी हैव डिस्कस्ड द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, व्हाट आर दिस एडवांटेजेस? इट क्योर द health issues or we can say that diseases fastly as well as without side effect, but along with that there are some disadvantages also. So what are these disadvantages? As we know that size of the nanoparticles is very small, so what will happen? In general we cannot see by naked eyes, so it is possible that when we are taking the oxygen inside, means when inhalation is there, respiratory system is there, at that time these nanoparticles may enter in the respiratory tract and they causes the lung damage also. So this is the one disadvantage. Second one, as we know that when any pollution is there, if it is to the water, then we are calling it as a water pollution, as well as sound. If that pollution is because of sound, we are calling it as a sound pollution. Like that here also, if pollution is because of nanoparticles, it is called as a nano pollution, and it is very hazardous, very dangerous to the living things, or we can say that to the living organism also. These nanoparticles or nanotechnology causes the air pollution, or it increases the air pollution. Next one, if we consider the size, composition as well as shape of the nanoparticles, which are the characteristic features of these nanoparticles, they are relevant to the health issues also or health effects also. So these are the disadvantages of the nanoparticles. तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर दिए 3 मार्क्स के ऑल क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द नैनो केमिस्ट्री टॉपिक। सो ऐसे ही बने रहो अपने चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपना चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना या फिर लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।